ಇಲ್ರಿ ನಾವೇನು ಸಾಲಿ ಕಿಲಿ ಏನು ಕಲಿತೇ ಇಲ್ರಿ, ಕಲಿಸಿಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ. ಅವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೀ ಅದು ಏನು ಅವಾಗ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಇದು ಕೇರ್ನ್ಯಾಗ ತೊಗೋತಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ಮ. ಮತ್ತು ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಾನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕೂಸುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇರಲಿ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ, ನಮ್ಮದರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ, ಮಕ್ಕಳದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ಜರ ಮುಂದೆ ಕರೀಲಿ, ಚೆಂದಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಚ್ಚಿವ್ರಿ. ಎಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರ, ನಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗುರಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. मेरी बेटी को दिल में छेद है, इस बात का पता मुझे जनवरी में पता चला था, तब जो वो 5 महीने की थी। इसके पापा ने एक अपनी फ्रेंड से बात की होगी तो उन्होंने बताया श्री सत्य साई हॉस्पिटल है, वो रायपुर में है और वहाँ पे बच्चों का ही इलाज होता है। ये हॉस्पिटल की सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक मंदिर है और यहाँ पे बिल वाला कोई भी काउंटर नहीं है। यहाँ के 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लेना पड़ा और सब यहाँ पे फ्री ही मिलता है। और जब मैंने पहली बार देखा मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसको नया जन्म मिला है, मैं बहुत खुशी हुई। When I was in 8th, a sudden sorrow struck our family that my father passed away due to sudden stroke. My mother was a daily wage worker, became the sole breadwinner of the family, and it was very difficult for her to bring us up with a little amount that she received. Since my mother used to go to work every day in the morning, she was not able to prepare food and we had to go to school on empty stomach. But here life took a different turn. When I was studying in government school, every day I used to get hot breakfast through Annapurna people. I wish many poor children would be benefited by this Annapurna program. Sadguru Shri Madhusudan Sai, through whom our most beloved Divine Master, Bhagavan Shri Satya Sai Baba, is taking his mission forward towards culmination. Whatever Swami starts becomes a movement. Today, it is not just about launching an app with the name Gurukulam. It's a whole new beginning. It is my wish. I want to open 600 schools across the length and breadth of this country. We are here to create good men and women before great men and women. Once you are a good person with selfless thoughts, you are bound to be a good engineer of service to society. You will be a good doctor who will serve many more who are in need of your service. These little children, they go to school. How can they learn without food in their stomach? They may not remember my name or your name, but this is one thing they will always remember. There are some good human beings who cared for us. They came on their own and with great love, they served us. That is what is going to change the world. God is defined as somebody who has 4 hands, 6 hands, 8 hands, 10 hands. But truth is that God does not personally have these many hands. It is a symbolism. That is the strength of God multiplies with each one of us doing our bit. The most beautiful sight is a child smiling. At this new children's screening center, young Fijians will be provided heart screenings completely free of cost. It is not just giving food, it is not just giving education, it is not just giving health care. Baba is showing to the world today, the people and their leaders, this is the way it should be done. From the time of conception
Till the child grows and becomes a noble citizen of the country, our work does not end. Somebody came and asked me, Swami, can I be a part of your mission? I said, you are not a part, you are the mission. Your transformation is the mission. That's why everything else has been created. These are all aids and supports to help you undertake this mission of your own transformation. Lokahite, to serve the society, to make the society better, is all that we should think, speak, and do all the time. Sadhguru's mission to provide wholesome nutrition, holistic education, and compassionate healthcare has expanded at an inexorable pace. Be it the number of service projects, the number of beneficiaries, or the number of countries, to any bystander, this may look impossible. But for Sadhguru Sri Madhusudan Sai, nothing is impossible when love is the undercurrent of all service. Ladies and gentlemen, from the blockbuster movie series of the same name, presenting Mission Impossible, we have Demetrius Sir on the grand piano, Sai Shankar on the drums, Aditya and Ayush beatboxing, Rishi Gopinath on the electric guitar, and Om Sai Pradhan on the bass guitar. Mission Impossible.
One world, one family. Vasudhaiva Kutumbakam is the only way to make the world better here and now, says Sadhguru Sri Madhusudan Sai, a humanitarian, a visionary, a social and spiritual leader who has established several institutions of public service in the last 10 years since 2012. These institutions offer services to the most needy in the fields of nutrition, education, healthcare and socio-care in about 33 countries absolutely free of all costs. Identifying the gaps in societal needs and addressing it in a holistic and sustainable way to have a lasting impact has been the approach to service in all the institutions set up by Sadhguru Sri Madhusudan Sai. Nutrition. The Annapurna Morning Nutrition Program serves healthy morning nutrition to more than 1.2 million school-going children in India and about 5,000 children in 5 other countries overseas. Eradicating hidden hunger is one of the main goals of Annapurna, and hence a customized micronutrient-rich supplement, Sai Shua, is served to children every morning to ensure better attendance and a healthy childhood devoid of wasting or stunting. The vision is to cover 20 million school-going children by 2024-25. Over the last decade, Annapurna has also served the cause of maternal nutrition and eliminating pregnancy and birth-related issues by providing expecting and lactating mothers with Sai Shua, specially customized for their needs. Education. The need of the hour is an education model that will induce human values into the veins of education to ensure a holistic development of individuals who will cultivate the commitment to serve the society and help to address the manifold issues and needs of our societies. A practical testimony to implementing the ancient way of education that is based on the molding of wholesome individuals with brilliant heads, compassionate hearts and competent hands, the 3H formula is the Sri Satya Sai Lokaseva Gurukulam group of institutions. These institutions impart integral values-based education to over 5,000 students, both boys and girls, from grade 6 to doctorate programs across 27 campuses in India and at 3 institutions outside India, completely free of all costs. The institutions are residential edifices set up in naturalistic settings as symbols of majesty and modesty, reminding one about the genuine goals of education, the acquisition of all forms of knowledge, being a paragon of virtues, and working for the welfare of society. The higher education wing is the Sri Satya Sai University for Human Excellence, an institution which empowers young students with the necessary knowledge, skills and character with only one purpose, serving the society. Thus, every student who passes out of the university joins the alma mater, which itself is a service institution, or posted at any of its other sister organizations based on the need, thus creating a self-sustainable system. The university is all set to commence a first-of-its-kind free medical college that will bestow the gift of free medical education to rural students who have the aptitude but not the affordability. This medical college will mold the rural youth as capable and compassionate healthcare professionals who will selflessly serve the society. The university is also the only general university that offers courses in fine arts and Vedic and spiritual studies. To promote learning and research in Vedic studies and to disseminate its priceless wisdom to all, the Sri Satya Sai Lokaseva Veda Gurukulam was set up in the year 2021. Healthcare. Sri Satya Sai Sanjeevani Centers for Child Heart Care are the world's largest chain of pediatric cardiac hospitals without billing counters for addressing the global burden of congenital heart diseases. 5 child heart care centers in India at the states of Chhattisgarh, Haryana, Maharashtra, Karnataka and Telangana. 5 mother and child hospitals in India at the states of Chhattisgarh, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Uttarakhand. 5 healthcare centers in the countries of Fiji, Suva, Sri Lanka, Batticaloa, USA, Clarksdale, and 2 facilities in Nigeria, Ebe and Imo, offer completely free of cost services to all with specialized services for children and their mothers in the spirit of a compassionate healthcare model. The 5-pronged approach for holistic healthcare adopted by Sanjeevani is cure through the heart care centers,
prevention through the Divine Mother and Child Health Program, a health screening program, nutrition through Sai Sure multi-nutrient supplement, advanced human genomic research for congenital heart diseases, healthcare education and training that provides skill development programs for doctors, paramedics, and allied healthcare professionals. So far, Sanjeevani has trained around 700 students of physiotherapy, 300 nursing students, 26 perfusion technologists, 20 cardiac technologists, and 20 physician assistants. All this has been done totally free of cost to empower the new generation with medical knowledge and practical experience. At the Sanjeevani hospitals in India, close to 25,000 little hearts have been treated through invasive and non-invasive procedures as of February 2023. Outpatient consultations and screenings have also been performed for over 412,000 children. Sri Sathya Sai Sarla Memorial Hospital is a multidisciplinary facility at Karnataka with a high-dependency inpatient unit providing services to the rural and underprivileged sections of the society. Over 1,000 outpatients and 300 inpatients are taken care every single day, all completely free of cost at this hospital. The Sarla Hospital will soon serve as the teaching and training hospital for the Free Medical College. 12 centers for human development have been set up across 11 countries for conducting several service and spiritual activities. To take this triple elixir of nutrition, education, and healthcare to the doorsteps of children is a saga of love and service, as several lives are being illumined through these benevolent acts every single day. Has access to healthcare. Till everybody has shelter above their head and food in their stomach, I don't think our organization can afford to rest. I know you spoke about sustainability in another question, but in the next 10 to 15 years, where do you see the organization going? I have two answers. One is a practical answer, one is the honest answer. The honest answer is I really do not know. It's divinely driven. And we never thought 5 years ago that we are going to be opening a medical college 5 years later. But as the need arose, we started working towards it. But my view is that I can't tell you 15 years, but I want to have a view till every child is put into the school, till every child or every sick person has access to health care, till everybody has shelter above their head and roof above the head and food in their stomach. I don't think our organization can afford to rest. That is our vision, and it's for the whole world. So that's where we are heading. Whether it will happen in 15 years or 50 years, I cannot say. But that is our larger vision. My complaint is very simple. You always underplay. You do 100, you say 1. I have seen the kind of work. In fact, I've seen personally the medical college, which is now under construction in the Bangalore premise. And the kind of work you've done, whether it is Gurukulas, whether it is the other systems, it is fantastic. But you people don't advertise, you don't tell. So my complaint is why? Why you people are underplaying it? I want to know. This is a serious complaint. I think we are the people who work more and talk less. That has been our culture. So we have been maintaining that so far. But I think even what I have said just now, I hope you all trust that we actually do all these things. If I say more than this, most of the people will shake their head and walk away from the room saying, I don't think this is true. So even if this much, if you can trust and believe that it is true, I think we are happy. But I have seen a divine mechanism.
where it attracts right kind of people to itself. You know, they come. And I wonder, in the last 1 year, I would have met so many new people, I have lost count of it. And I never invited them. They have come, found out from somebody, they all come. And they all participate and support like you had come. So, but we did take your point last time, you did mention that we'll have to now develop this habit of talking a little more than what we do. Perhaps it is important for the world to know from that point of view that good stories should spread. Today's interaction gave me much more clarity, in fact, of his mission and his purpose. But doing it free is something which is extraordinary. That only Satyasai Gram, people with total dedication, could have planned and could have executed well. In about the next 10 years, they'll make a mark all over the world. जी पाऊं ना, डर लगा तो मैं किसको पुकारूं, नींद में हाथ किसका मैं थामूं। माँ ओ माँ, दूर तुमसे मैं जी पाऊं ना। छोटे दोस्त ओ मेरे यार, कर जरा हम सभी पे एतबार। ओ छोटे दोस्त ओ मेरे यार, हम सभी तुझसे करते हैं प्यार। दिल यूं ही धड़कता रहे, कन की धुन सपने रही है बुन। है सांसें तुम्हारी, है धड़कन तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा हुआ। बने मेरा जीवन तुम्हारा ही दर्शन, यही मैंने मांगी दुआ। एक भली जिंदगी ये मेरी हो, खुदा ताज तेरा करम, प्यार बांट
In my village, there is no medical facilities. Nearest hospital is 50 kilometers away from my village. I'm studying in 10th standard and I want to become a doctor. My parents being farmers, they cannot afford medical education as it is very expensive. The University for Human Excellence has taken the next big step by envisioning to expand its services by providing free medical education to the rural students with the sole aim of creating service-minded medical professionals who will serve in rural geographies. In this direction, a free medical college will be established soon in Muddenahalli by the university. This institution is something which is an eye-opener to many people. In India, 1.5 million students write medical entrance exams. How 80,000 people get enrolled. I'm going to go into medical field. I did realize that it's going to be very, very expensive and it's going to be time consuming. But then when I came to this institution, I did realize that they are opening a medical college for free of cost. I have known friends who are very passionate about medical education. They were even good in academics and fared quite well. But given the high cost of medical education, they couldn't afford it and had to change their field of education. I am looking forward to continue my education in this medical college. I was born in Mandya, a rural district in Karnataka state, mostly comprising of farmers. I have seen hundreds of families struggle to access even basic healthcare facilities. I feel it's my duty to serve the society by dedicating my life towards strengthening rural healthcare in the country. Thanks to Rajeshwari Academic Block for starting a free medical college for rural children like me. Our Gurukulams since the ancient times never charged a fee. So this was never a culture in India to sell food or education or healthcare. I think the day we started doing that, our country started declining. Swami, when I look at the way you're offering all these services across the three verticals of education, nutrition, and healthcare without charging a single rupee, it makes all of us wonder if some basic minimum amount can be charged for those who can afford to pay. There are two aspects to it. One is the aspect of the principles on which we run these institutions. And the second is the very practicality of why we run it the way we run it. If I go to the principles part of it, it was Bhagwan Sri Satya Sai Baba's vision that education, healthcare, and food, these are basic necessities of life and should not be commoditized. Education is the fundamental right of every child born on earth. Healthcare is a fundamental right. And food and water, these are basic rights of every human being born anywhere in the world, whether rich or poor. And as Indians, we have never sold education, health or food. Our Gurukulams since the ancient times never charged a fee. Whether you are the son of the king or you are the son of a farmer, all of you studied in the same Gurukulam, all of you slept on the same floor, ate the same food, did the same things, and at the end, as a Guru Dakshina, whatever the parents could afford, they offered it to the Gurukulam and they went. Because of which students had gratitude for the society. Because they thought it's society which has provided for their welfare and education, so it is their turn to give it back once they graduate. And as healthcare also, our Vaidyas never charged anybody.
Vaidyas were a part of a system which was patronized by the kings or the wealthier people in the society, like the temples and other places. And each temple had a Vaidya associated with that temple, even a midwife. And they looked after the welfare of the people around in that village. So this was never a culture in India to sell food or
sit down and then we'll stand up. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು हृदयपूर्वक स्वागत। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। Invoking the blessings of Bhagwan Shri Satya Sai Baba and offering our pranams to Sadguru Shri Madhusudan Sai, Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, dignitaries seated on the dais, off the dais, esteemed guests, members of the medical fraternity, philanthropic partners, friends from the media, well-wishers and donors who have come from over 15 countries, volunteers, staff, students, alumni, and everyone joining us live from around the world. Sai Ram, Namaste, and a very good morning. We extend our most warm welcome and deepest gratitude to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the totally free medical Karnataka. हम कर्नाटक राज्य के मुदनहल्ली में स्थित इस एक अद्वितीय पूर्णतया निःशुल्क अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान तथा श्री सत्य साई राजेश्वरी स्मृति खंड के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। अब हम सद्गुरु श्री मधुसूदन साई से अनुरोध करते हैं कि वे श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करें। We also extend our most warm welcome to Shri Basavaraj Bommai, Chief Minister, Government of Karnataka, Dr. K. Sudhakar, Minister for Health and Family Welfare and Medical Education, Government of Karnataka. May we also welcome Shri B. N. Narsamurthy, Chancellor, Shri Satya Sai University for Human Excellence, Dr. C. Srinivas, Chairman, Shri Satya Sai Health and Education Trust, and the leadership team of the Prashanti Balamandira Trust present here today with us. Today is truly a momentous day as we all gather to witness the inauguration of the Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research. Guided by the norms of the National Medical Commission of India, this first of its kind, totally free private medical college in India will bestow the gift of medical education to rural students, molding them into compassionate healthcare professionals whose only goal will be to selflessly serve the society. अब हम श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सी श्रीनिवास को हमें संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सी श्रीनिवास श्री सत्य साई संजीवनी ग्लोबल सेंटर्स फॉर चाइल्ड हार्ट केयर का नेतृत्व कर रहे हैं। चिकित्सा महाविद्यालय के श्री सत्य साई राजेश्वरी स्मृति खंड का नामकरण उनकी माताजी स्वर्गीय डॉक्टर सी राजेश्वरी की स्मृति में रखा गया है, जिन्होंने श्री सत्य साई जनरल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड की स्थापना की थी और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया था। डॉक्टर सी श्रीनिवास। Offering our most reverential, respectful and devoted pranams at the feet of the founding father, Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Most beloved, revered, and our heartthrob, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Respected dear elder brother Basavaraj Bommai ji,
a son of Karnataka, and the Honorable Chief Minister. Dear brother K. Sudhakar, dynamic leader and Minister for Health, Government of Karnataka. Revered Sadguru Madhusudan Sai Ji, beloved brother Narsimhamurthy Ji, distinguished ladies and gentlemen from over 50 countries physically and virtually present in this most memorable celebration of the first totally free of cost medical college to come up in the holy state of Karnataka, in the holy land of Chikbalapur, where the first Bharat Ratna of India, Sir M. Vishveshwaraya, lives in his presence. Students, faculty of so many institutions spread in so many parts of India and in many parts of the world. परम प्रिय नरेंद्र भाई जी, बात शुरू हुई 1960 और 70 के बीच में, जब देश की महान सेवक गोविंद नरहर गनपुले, जो देश की सेवक सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करते थे, वो आखिरी दिनों में व्हाइटफील्ड आना हुआ और यहाँ निवास करने का संकल्प लिए थे। वहाँ एक सुपुत्र कर्नाटका मैसूर स्टेट की श्री आर दिवाकर के संबंध से भगवान श्री सत्यसाई बाबा की दर्शन पे आए, तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी सारी जीवन देश की सेवा में समर्पित हो गया। आखिरी दिन भी मैं स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि मैं अभी एज बढ़ रहा है, कि मैं हेल्थ सेवाएं देश को प्रदान करे करके वो बाबा से प्रार्थना किए। तो बोले बाबा को, बाबा आप तो नौजवान हैं, मैं तो उम्र में बड़ा हो गया, आप कृपया ये छोटी सी ज़मीन में शुरुआत आपकी निशुल्क सेवाएं शुरू करें। तो बाबा ने स्वीकार किया कि बोले मेरा तो काम ही देश का सेवा है, मैं जन्म लिया देश की सेवा के लिए, तो ये मेरा कर्तव्य है। और फिर स्वीकार करने के बाद मुझे देखे, मैं फर्स्ट ईयर उनकी कॉलेज का छात्र था और उनकी प्रश्न था तुम्हारी माँ कब आ रही है इधर। तो बाबा जानते थी मेरी माँ अफ्रीका में जंगलों में सेवा कर रही थी, तो हर 15 दिन यही प्रश्न पूछते गए कि तुम्हारी माँ कब आ रही है इधर। तो 1 साल बाद मेरी माँ व्हाइटफील्ड आना हुआ, तो हम 3 ये गाड़ी में जाके ये ज़मीन पे उतरे और बाबा ने बोला मैं इसलिए बुलाया तुमको, यहाँ आप काम करिए, यहाँ से हम देश की सेवा शुरू करेंगे। तो माँ हाथ जोड़ के बोली बाबा आपने बोला अस्पताल, मगर यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। धरती माता तुम्हारी अस्पताल है, आसमान तुम्हारा अस्पताल का छत है, यहाँ से तुम सेवा शुरू करो। तो भाई साहब 1970 में जो शुरू हुआ, आज के दिन जो आप मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ सत्य साई की प्रेम की सेवाएं नहीं पहुँचा है। सारी देश में गांव-गांव से लेके सत्य साई की निशुल्क निस्वार्थ क्वालिटी सेवा अभी उपस्थित है। अभी आप सद्गुरु मधुसूदन साई तो एक अनेक ऊंची स्थिति पे लेके गए। उन्होंने आदेश दिया कि डॉक्टर्स भी हम ऐसे बनाना जो देश की सेवक हो।
तो मेडिकल एजुकेशन जो मधुसूदन साई जी शुरू कर रहे हैं, एक तो होता है मेडिकल, जो बाबा बोलते थे टाइमली होना चाहिए, टाइमलेस भी होना चाहिए, और एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो मैन मेकिंग होना चाहिए। बाबा का आदेश था और उनकी जीवन समर्पित थी कि एजुकेशन में मैन मेकिंग होना चाहिए, देश की सेवा का एक ऊर्जा हर एक बच्चे की दिल में उत्कृष्ट होना चाहिए। सो ये है सद्गुरु मधुसूदन साई की यूनिक मेडिकल कॉलेज। इससे एक बड़ी भाग्य क्या है कि द मोमेंट इज टुडे द मोमेंट ऑफ इंडिया, एंड द मैन ऑफ द मोमेंट none other than beloved dear brother Narendra Modi ji is here to inaugurate the one of its only kind, totally free of cost medical college. May I request you all to stand in ovation and respect to this great son of India in dedicating ourselves to Mother India in its services. जय भारत, जय कर्नाटका, and जय साई राम। Vasudhaiva Kutumbakam. One earth, one family, one future. The ancient Indian thought of Vasudhaiva Kutumbakam recognizes the interconnectedness of all creation and has been adopted as the theme for this year's G20 summit under the leadership of our dearest Prime Minister. It is this vision that is reflected in the numerous mammoth societal initiatives established by Sadhguru Sri Madhusudan Sai, which provide free education, free healthcare, free nutrition, and free social care services not only in India but across 33 countries around the world. We now pray to Sadhguru Sri Madhusudan Sai Ji, founder Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, for his benedictory message. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस अमृत काल में अमृत भारत की परिकल्पना के इस स्वप्न को साकार करते हुए श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का इस पंचगिरी प्रदेश मुद्दनहल्ली की पुण्य भूमि में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा ने इस भूमि को तपोभूमि का नाम दिया और यहाँ के त्यागजीवियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखकर समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर इसे त्याग भूमि का नाम दिया। और अब ये सेवा भूमि ही नहीं, सिद्ध संकल्प भूमि बन गई है, जहाँ पर कोई भी निस्वार्थ संकल्प जब भी लिया जाता है वो अवश्य पूर्ण होता है। 1 साल पहले इसी मंच पर गृह मंत्री जी की उपस्थिति में हमने एक संकल्प लिया था कि अगले साल माननीय मोदी जी के हाथ से ही इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना चाहिए और 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं इस सेवा का लोकार्पण करने के लिए। केवल 20 दिनों के अंदर आमंत्रण से उद्घाटन तक ये कैसे संपन्न हुआ, इसका एकमात्र कारण प्रधानमंत्री जी का स्वभाव कि कोई भी सत्कारी हो उसे वो पूरा सहकार देते हैं, उसको सराहते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। केवल 20 दिन के अंदर उन्होंने निश्चय किया और उनकी इतने व्यस्त शेड्यूल में भी उन्होंने समय निकालकर आज वो हमारे साथ यहाँ पर है। इसके लिए हम सभी सभा के जितने भी सदस्य हैं, संस्था के सदस्य हैं, सभी उनके सदैव आभारी रहेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपके हाथों ऐसी संस्था का लोकार्पण हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची 7 साल पहले
प्रीति नाम की इसी मुद्देनहल्ली गांव की, उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर वो कन्नड़ा मीडियम में शासकीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी और उनके पिता रसोइये का काम करते हैं, तो उनको पढ़ाने में भी असमर्थ थे। तब हमने कहा, क्यों बनना चाहती हो आप डॉक्टर? तो उन्होंने कहा, मैं गांव में जाके सेवा करना चाहती हूँ। हमने कहा, आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको अवश्य ये अवसर हम प्रदान करेंगे। और आज 7 साल बाद वो डॉक्टर हैं और हमारे ही संस्था में पहुँच चुकी है। तब ये सोच आई कि कैसे गांव के बच्चों में, जिनमें सामर्थ्य है, शक्ति है, श्रद्धा है और समाज सेवा करने की प्रेरणा भी है, उनको कैसे ये अवसर प्रदान किया जाए, कैसे निःशुल्क प्रदान किया जाए, इस पर कार्य चलता रहा। और आज उसके परिणाम स्वरूप ये चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र तैयार हुआ। और ये माननीय मोदी जी का निजी संकल्प है कि वो यहाँ पर आए। मुझे पता है कि ये उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से कि इसको आकर मुझे ही समर्पित करना है, और उन्होंने जो बात मुझे कही थी वो बात आपने रखी है, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। सरकार, समाज और संस्था, ये तीनों इकाइयां जब मिलकर काम करेंगी तो ये अमृत काल में अमृत भारत का निर्माण ज़रूर संभव है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही समय है, सही समय है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है भारत को विश्व की चरम सीमा पर पहुंचाने का, और उनके नेतृत्व में ही ये संभव है। यदि ये भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव नहीं तो किसी और देश में किसी के भी नेतृत्व में संभव नहीं है। आज मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है और राजेश्वरी माँ की स्मृति में यहाँ के जो विद्यार्थी आगे शिक्षक, चिकित्सक बनेंगे, वे उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़कर देश सेवा करेंगे, ये मेरा मानना है। और इसी उद्देश्य से इस अस्पताल की व संस्थान की स्थापना की गई है। मैं 1 मिनट लेते हुए हमारे देश विदेश से आए कई भाई बंधु जो हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके इन संस्थाओं का निर्माण व संचालन करने का बीड़ा उठाया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और कुछ लोगों को धन्यवाद आपकी अनुमति से देना चाहता हूं, जिनको आपकी नाम पर कुछ प्रतीक चिन्ह मिलना है, लेकिन वो समयाभाव के कारण इस कार्यक्रम के उपरांत दिया जाएगा। सबसे पहले मैं श्रृंगेरी शारदा पीठम के जगत गुरु महासन्निधानम भारती तीर्थ स्वामी जी एवं दिव्य सन्निधानम विदुशेखर भारती जी स्वामी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही में श्री निर्मलानंदनाथ स्वामी जी, श्री आदि चिंचनगिरी महासंस्थान के, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बहुत सहयोग किया है हमारा। बी नारायण राव जो हमारे वरिष्ठ त्यागजीवी हैं, उनका भी अभिनंदन। और हम वी हैव सम मेजर पैट्रन्स, इफ़ आई डू नॉट मेंशन देम आई थिंक आई विल फेल इन माय ड्यूटी। श्री सीताराम जिंदाल, श्री ए बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर महाबलेश्वर, श्री अरविंद डिसिल्वा, श्री सुनील गवास्कर, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, जे चौधरी गारू, BC प्रभाकर गारू, and our CSR partners, Aditya Birla Group, Z Entertainment, Bharat Petroleum Corporation Limited, Fanuc India, PricewaterhouseCoopers, Western Digital, Dell, Informatica, Sabre Travel, ICICI Foundation, State Bank of India, ASM Technologies, Bangalore International Airport Limited, VRL Logistics and Amazon Web Services. Our architects, B.R. Ravi Shankar, Kiran Kumar, Srivatsan K, civil contractors, and Keshav Murthy, P. Purushottam, Mutyala, Anil and Sagar, Basavan Gowda, Shiv Prasad, Vidya Sagar और केशव गौड़ा जी, हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नागेंद्र कुमार N, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट नागेंद्र जी, R.K. सुब्रमण्या हमारे ट्रस्टी, भरत द प्रोजेक्ट हेड, एंड हमारे वेरी यंग टीम ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर्स चिन्मयानंदा, अक्षय, विजेत एंड शमंत. Last but not the least, the devotees and supporters from around the world, some of whom are present here from over 15 countries like Argentina, Australia, Austria, Fiji Islands, Greece, India, Italy, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, Sweden, Turkey, the United Kingdom, Ukraine, the USA, Maldives and Indonesia. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. We are very, very grateful to you for all that you have done for the sake of this trust. And I'm sure this venture, under the guidance of the Prime Minister, who has taken up so much upon himself, आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. तो इस अमृत काल में ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास को सदा आपका समर्थन मिलता रहे, इस आशा के साथ पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए, हमारा भारत वो पुण्य भूमि, हमारी भारत की भूमि जहाँ पर कोई भी निस्वार्थ संकल्प पूरा हो सकता है, तो एक संकल्प एक और लेता हूँ मैं आज बाबा की कृपा से कि बाबा के 100वें जन्मोत्सव में जब 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल तैयार हो जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों नवंबर 2025 में लोकार्पित हो, ये मेरी प्रार्थना है, ये संकल्प है और ये ज़रूर ये संकल्प पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है.
आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुधाकर, आप सभी के सहयोग से ये सब संभव हो सका है। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಟ್ಕಡೆಯ ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೇಶ ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಜಿಯವರೇ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದು 3ನೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಯವರು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್, the health services have been so costly nowadays. First, I want to thank our Honorable Prime Minister, who had a great vision and great concern for the poorest of the poor in this country. And for the first time, a country with 130 million, the Premier of this country has dared to have a program, Health for All, through Ayushman Bharat. He is a man who dares to dream most difficult things, and he is a man who can achieve the most difficult things. And the services of Ayushman Bharat to almost all citizens has been very well established. And I am really happy and proud to say that Karnataka has got the highest number of Ayushman card. More than 1.5 crores of the Ayushman cards are there, and we are serving the people under the guidance of our Honorable Prime Minister. I congratulate Madhusudan Sai, Narendra and Dr. Srinivas putting up a hospital of a world class and for the poorest of poor. And it's also totally free, which is really unbelievable during this time. It's really amazing. So here is a culmination of great personalities, a man who has created health services for the poorest of poor in the country, and a samstha and an institution and a head Madhusudan Sai is giving the free medical services for the poorest of poor. So this is a day which all the poor people of this country should have a ray of hope, and they should really have a Atma Vishwas, and this is the real Atmanirbhar Bharata. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. The Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research is an endeavor to bridge the healthcare gap in India by enabling access to medical education for the rural youth of the country. यह चिकित्सा संस्थान चरक संहिता में वर्णित शपथ के अनुरूप ऐसे चिकित्सा कर्मियों को निर्मित करेगा जो केवल मानवता के हित में कार्य करेंगे. We now humbly invite
our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to unveil the inaugural plaque of the Shri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research by the press of a remote. Now we will have a short film screened on the service initiatives. श्री सत्य साई बाबा के आदर्शों के अनुरूप तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत काल की परिकल्पना के संयोजन में विगत 10 वर्षों में सद्गुरु श्री मधुसूदन साई ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अनेक निःशुल्क संस्थान स्थापित किए हैं। पोषण, कुपोषण रोकने के लिए समर्पित पोषण अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रौद्योगिकी, जन भागीदारी और श्री अन्न को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। इन्हीं बिंदुओं को समायोजित करता अन्नपूर्णा प्रातःकालीन पोषाहार कार्यक्रम और साई श्योर बहुपोषक तत्व परिपूरक भारत में 12 लाख से अधिक तथा विदेशों में 5000 से अधिक शालेय विद्यार्थियों की अगोचर भूख को शांत करता है। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण में प्रत्यक्ष कमी आई है। विशेषकर बालिकाओं की रक्ताल्पता में भी उल्लेखनीय कमी आई है। जल जीवन मिशन के अनुरूप अन्नपूर्णा न्यास 5 लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है। शिक्षा, श्री सत्य साई गुरुकुलम संस्थान समूह भारत में स्थित 27 परिसरों में तथा अन्य देशों में स्थित 3 परिसरों में 5000 से अधिक विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों पर आधारित विद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विस्तार पर चर्चा करते हुए बेटियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर बल दिया था। श्री सत्य साई गुरुकुलम समूह बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही साथ आजीविका भी प्रदान करते हुए ग्रामीण बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ग्रामोदय से भारत उदय के अभियान पर है। इसी के अनुरूप श्री सत्य साई मानव अभ्युदय विश्वविद्यालय और श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा का निःशुल्क उपहार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक रूप से समर्पित, सक्षम और करुणामय शिक्षक और चिकित्सक सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। स्वास्थ्य संरक्षण, भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मूलभूत सिद्धांतों के समायोजन में सद्गुरु श्री मधुसूदन साई ने एक करुणापूर्ण स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली को अपनाया है। विश्व की विशालतम पूर्णतया निःशुल्क श्री सत्य साई संजीवनी बाल्य हृदय चिकित्सालय श्रृंखला भारत में 10 चिकित्सालयों और विदेशों में 2 चिकित्सालयों के माध्यम से जन्मजात हृदय रोगों के वैश्विक दायित्व को संबोधित कर रहा है। कर्नाटक के सत्यसाई ग्राम में स्थित श्री सत्य साई सरला स्मृति चिकित्सालय प्रतिदिन 1000 से अधिक बाह्य रोगियों को तथा 300 से अधिक आंतरिक रोगियों को उच्च गुणवत्ता युक्त अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना की अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त चिकित्सालय उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के निर्माण हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगामी 10 वर्षों में संपूर्ण भारत के प्रत्येक तालुक में 6000 साई स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सबके विकास के उद्देश्य से सक्रिय पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के हमारे समस्त परमार्थ कार्य हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों में योगदान का हमारा विनम्र प्रयास है। अब हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें। कर्नाटका के मुख्यमंत्री
श्री बसवराज बोम्बाई जी, सद्गुरु श्री मधुसूदन साईं जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, कर्नाटकದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. आप सभी इतने उमंग और उत्साह के साथ अनेक सपने लेकर के, नए संकल्प लेकर के सेवा की इस महान प्रवृत्ति में जुड़े हैं. आपके दर्शन करना ये भी मेरे लिए सौभाग्य है. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. चिक्कबल्लापुरा आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है. अभी मुझे सर विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि का और उनके म्यूजियम पर जाने का सौभाग्य मिला. इस पुण्य भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं. इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किसानों, सामान्य जनों के लिए नए इनोवेशन किए, इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए. साथियों, इस धरती ने सत्य साई ग्राम के रूप में भी सेवा का एक अद्भुत मॉडल देश को दिया है. शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जिस प्रकार मानव सेवा का मिशन यहां चल रहा है, वो वाकई अद्भुत है. आज जो यहां मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है, इससे ये मिशन और सशक्त हुआ है. श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हर वर्ष अनेक नए प्रतिभावान डॉक्टर देश की कोटि कोटि जनता की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करेगा. मैं संस्थान को और चिक्कबल्लापुरा यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है. कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा है 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा. इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा. इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है. और वो जवाब है सबका प्रयास. हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा. इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है. विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है. कर्नाटका में तो संतों, आश्रमों, मठों की महान परंपरा रही है. ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आस्था और आध्यात्म के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सशक्त करती रही है.
आपके संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य भी सबका प्रयास की भावना को ही सशक्त करते हैं। साथियों, मैं देख रहा था, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसे सरकार के साथ साथ जो दूसरे संगठन हैं, उनके लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है। सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सामाजिक सेक्टर हो, सांस्कृतिक गतिविधि हो, सभी के प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। साथियों, पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने, उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं। ये जो काम देश में हो रहा है, उसका लाभ कर्नाटका को भी मिल रहा है। कर्नाटका में आज लगभग 70 मेडिकल कॉलेज है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से जो मेडिकल कॉलेज बीते वर्षों में बने हैं, उनमें से एक यहाँ चिकबल्लापुरा में भी बना है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तो हमने 150 नर्सिंग संस्थान बनाने की भी घोषणा की है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए बहुत अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, तो भारत के मेडिकल प्रोफेशन के सामने रही एक चुनौती का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगा। इस चुनौती की वजह से गांव के, गरीब के, पिछड़े समाज के युवाओं के लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल था। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला, लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है, देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है। कन्नड़ा में भी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए। ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक देश में ऐसी राजनीति चली है जहां गरीबों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, जबकि भाजपा सरकार ने गरीब की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना है। हमने गरीब और मिडिल क्लास के आरोग्य को प्राथमिकता दी है। हमने देश में सस्ती दवाओं की दुकानें, जन औषधि केंद्र खोले हैं। आज देश में लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है। इन केंद्रों की वजह से कर्नाटका के गरीबों के हजारों करोड़ रुपए
दवाओं पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, मैं आपको वो पुराने दिन भी याद कराने को कहूंगा जब गरीब इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। भाजपा सरकार ने गरीब की इस चिंता को समझा, उसका समाधान किया। आज आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवार के लिए अच्छे अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। भाजपा सरकार ने गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की गारंटी दी है। कर्नाटका के भी लाखों लोगों को इस योजना का लाभ हुआ है। साथियों, पहले हार्ट सर्जरी हो, नी रिप्लेसमेंट हो, डायलिसिस हो, ये सब भी बहुत महंगा होता था। गरीबों की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इनको भी सस्ता कर दिया है। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी गरीबों के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। साथियों, हम स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों में माताओं बहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जब मां का स्वास्थ्य, मां का पोषण बेहतर होता है तो पूरी पीढ़ी का स्वास्थ्य सुधरता है। इसलिए चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, मुफ्त गैस कनेक्शन की योजना हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना हो, मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने की योजना हो, या पौष्टिक खाने के लिए सीधे बैंक में पैसे भेजना हो, ये सब माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी भाजपा सरकार सतर्क है। अब गांवों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, वहां पर ऐसी बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रयास हो रहा है। मकसद यही है कि शुरुआती दौर में ही बीमारियों की पहचान की जा सके। इससे माताओं बहनों के जीवन पर बड़े संकट को हम रोकने में सफल हो रहे हैं। मैं बोम्बाई जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि कर्नाटका में भी 9,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। हमारी सरकार बेटियों को ऐसा जीवन देने में जुटी है जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे और आगे जाकर के संतान भी स्वस्थ रहे। भाइयों और बहनों, आज मैं कर्नाटका सरकार की एक और वजह से प्रशंसा करूंगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एएनएम और आशा बहनों को और सशक्त किया है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स दिए गए हैं, उनका काम आसान बनाया गया है। कर्नाटका में आज लगभग 50,000 आशा और एएनएम कार्यकर्ता हैं, लगभग 1 लाख रजिस्टर्ड नर्सें और दूसरे हेल्थ वर्कर हैं। डबल इंजन सरकार इन सभी साथियों को हर संभव सुविधाएं देने के लिए जीवन आसान बनाने के प्रयासरत है। साथियों, आरोग्य के साथ साथ माताओं बहनों बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी डबल इंजन सरकार का पूरा ध्यान है। ये धरती तो मिल्क और सिल्क की धरती है। ये हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुनिश्चित की है। पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भी हमारी सरकार ने शुरू किया। इस अभियान पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार का यह भी प्रयास है कि डेयरी कोऑपरेटिव में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़े। गांवों में महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको भी सशक्त किया जा रहा है। साथियों, जब देश स्वस्थ रहेगा, जब विकास में सबका प्रयास लगेगा, तो विकसित भारत का लक्ष्य हम और तेजी से प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी साथियों को मानव सेवा के उस उत्तम प्रयास के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान साईं बाबा से मेरा बहुत निकट संबंध रहा और हमारे श्रीनिवास जी से भी काफी नाता रहा पुराना। करीब 40 साल हो गए इस नाते को। और इसलिए न मैं यहाँ अतिथि हूँ, न मैं मेहमान हूँ,
मैं तो आप ही के यहाँ की इस धरती का ही संतान हूँ। और जब भी आपके बीच आता हूँ तो रिन्यू हो जाता है नाता, पुरानी यादें ताजा हो जाती है और अधिक मजबूती से जुड़ने का मन कर जाता है। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। May we request everyone to kindly be seated? Thank you very much.
The timeless teaching of Sri Satya Sai Baba, love all, serves as the guiding light for a unique, compassionate healthcare mission which commenced in the year 1957 with a 6-bedded hospital in Puttaparthi in Andhra Pradesh. A general hospital was established in Whitefield, Bengaluru in Karnataka in the year 1970, and thereafter, free multi-specialty hospitals were also established in the years 1991 and 2001. Walking in the footsteps of Baba, his disciple Sadhguru Sri Madhusudan Sai, the modern-day visionary, a humanitarian thinker, and an ancient idealist, also resolved to work for the welfare of children to restore their health without levying a price tag to it. Sanjeevani, the sound of the yore, which means life-giving, was chosen as the apt name to string along with Sai's name for the hospitals founded by Sadhguru Sri Madhusudan Sai to reduce the global burden of congenital heart defects, and it came to be known as the Sri Satya Sai Sanjeevani Hospitals. The first Sri Satya Sai Sanjeevani Centre for Child Heart Care was established at Atal Nagar, Nava Raipur, Chhattisgarh in November 2012. Thus began the story of Sanjeevani, and a decade has gone by. And in these 10 years, the hospitals have flown as a clear stream of selfless love and service, saving thousands of little hearts and touching countless lives, invigorated by the guidance of Sadhguru Sri Madhusudan Sai and motivated by the dynamic leadership of Dr. C. Srinivas, chairman of the global chain of the Sanjeevani Hospitals, who's an exemplar of service, humility, and perseverance. After having been closely associated with Sri Satya Sai Baba and his various service projects in healthcare, education, and the drinking water supply for over 40 years, Dr. C. Srinivas has helped deliver free healthcare to hundreds of thousands of people in India. Realizing the need for more pediatric cardiac care centers in the northern and western parts of India, 2 more Sanjeevani centers for child heart care, coupled with a research center and a training center for pediatric cardiac skills, were established at Palwal, Haryana and Navi Mumbai, Maharashtra in the year 2016 and 2018 respectively. The research center was established in Palwal, which houses India's first and largest biobank with over 5,000 samples for congenital heart research. A training center offers institutional fellowships, undergraduate and postgraduate pediatric cardiac training, specialized training for paramedical and technical staff, and medical fellowship programs. Sri Satya Sai Sanjeevani Institute of Nursing and Allied Healthcare Sciences offers BSc and MSc Medical Surgical Nursing in cardiothoracic care. A cardiovascular tissue and homograph valve bank has also been established at Nava Raipur to mark 10 years of mending little hearts. The 4th Pediatric Cardiac Care Center commenced in the state of Telangana in November 2022. A peep beyond the shores of India made Sanjeevani restless about the condition of children suffering from congenital heart defects in other countries, and thus 2 centers at Fiji and Sri Lanka commenced in April 2022 and August 2022 respectively. Outreach medical centers started functioning at Clarksdale, Mississippi, USA, and Enugu and Imo in Nigeria. While thus actively engaged in the care of children, Sanjeevani was also aware of the needs of their mothers. Attention to one of them without the other cannot make care complete. Thus, the Divine Mother and Child Health Program started in 2017 to focus on preventive care for expecting mothers and rural school-going children. The concept of Matru Chaya, the shadow of the mother, was initiated to train mothers to handle their children soon after their procedures. Even during the pandemic, Sanjeevani Hospitals continued its operations and performed over 8,500 pediatric cardiac procedures. A fruitful 10 years indeed, for having mended the hearts of 23,000 children through both invasive and non-invasive procedures, and for having treated over 200,000 children through outpatient consultations. And now, Muddenahalli in Chikbalapur district of Karnataka gets the 5th Pediatric Cardiac Center with the inauguration of the new cath lab in association with Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research on the 97th birthday of Sri Satya Sai Baba. The 10-year-old Sanjeevani has now embraced 10 locations, 5 single specialty pediatric cardiac facilities in India,
and 2 overseas in Fiji and Sri Lanka, and the 3 mother and child hospitals in India, Palwal, Jamshedpur and Raiwala, apart from Yavatmal and Nawaraipur, which opened a few months ago. The sustainability of Sanjeevani through the last 10 years is evident in its concerted and collaborative approach by the coming together of the government, the society, and our organization, or as we call it, Sarkar, Samaj, Sanstha, the 3S model. Sanjeevani will continue this journey and tirelessly work towards establishing 25 centers across the world by Sanjeevani's 25th year. True to its name, Sanjeevani shall always bestow good health and well-being on children. Thus, Sanjeevani's story of the last 10 years is the story of restoring humanity in humans. It is the story that proclaims the power of goodness that is sure to steer back humanity to establish itself in its true essence. One world, one family, 10 on 10. Sai Ram, we request everyone to please be seated. No, they've opened it there. They've opened it there. Sai Ram, all will be stopped outside. For another 30 minutes, everybody is supposed to be seated. We request everyone to be seated until we get further announcements from SPG. Thank you.